So let's come back to our this diagram, simple diagram. We have found the control, we have observed the properties, we are yet to find the field. We know the field, but we haven't looked for it and we haven't seen it as part of BC. We haven't observed the properties. Remember, the BC was contact, field is status. Let's go back to tools. This is the contact BC. BC level pe search spec is a very important thing. Oh, I wanted to record what is search spec, right? I'll do that later. Okay. So these are the fields, children fields. See, I don't know whether you guys are able to understand how I'm clicking. If there were multiple BCs mentioned here, I had to highlight the right BC first and then click on this field. Only then I will be able to see the fields of that BC. Okay, I'll show you something. Now I'm seeing these fields are of account BC. Now when I highlight contact, okay, this is a simple thing as well. So status is the name of the field, control field, you remember? Right here. I clicked on S. Okay, this content BC is mapped to a table where one of the most important properties here is which table it is mapped to. This is the table, S underscore contact. So now basically tells you this thing as well. And now we have to identify this column. So I have to highlight that status field. Now that it is highlighted, I come here and check the column name status. So we have traversed this. Okay, let's check some other properties of this status field. Text length is 30. Type is dtype underscore text. Basically इसके अंदर numeric और alphanumeric text. Dtype underscore text means alphanumeric roughly. 30 is the length. Column is status, the most important thing that I already told. This is the name of the field itself. ठीक है. So let's look at the column and the table now. Same thing. Do you guys remember? If you highlight contact, the name of the table is S underscore contact, right? Yeah, and the column is contact. Status. Yeah. Let's see whether it is case sensitive or not. So it is not. So this is the name of the column. Oh, sorry, table. Anything else that I see? Comments लिखे रहते हैं. Whenever they do any customization or configuration or it's a custom field, comments will be listed, written here. Who made this to do what? This is a good development practice that every developer follows. If you are going there in a new project and they have been doing development for last 4 years, you can look at these comments and you can try to understand what was the purpose of this field originally. Okay. Similarly, click on this plus, click on column. क्या नाम था उसका? Status. ठीक है. Let's do instead of doing this one, let's do last name. Okay. So this is a field. This field is what we are talking about. So we go to Civil Tools. Okay, we look for that applet. So we have the applet name,
pharma professional entry applet, and we are just confirming the business component name. We right click on it and click on edit layout. Now we know the exact name of that field. Last name, LAST, no space, name, N capital. I would say just take case sensitivities seriously. See what happens is, let's say you are in the project and you are making these small mistakes now, then it will be very difficult for us to troubleshoot, for me to even find out what is going on. So just we call it sloppy hands. Just have or buttery fingers. Avoid buttery fingers and sloppy hands. Okay. So anyway, we now we know this is the applet. Now we know the control also. Control is last name. Okay. So coming back, last name. This is the control. Let's observe the properties. Automatic horizontal scroll true, automatic vertical scroll false. मुझे नहीं पता यार, करके देख लेना कभी ये Vertical scroll and horizontal. वो उसके ऊपर फील्ड में क्या, दैट इज द पॉइंट ना. फील्ड के अंदर क्या दोनों फॉल्स होती तो मैं समझ जाता कि भाई स्क्रॉलिंग अलाउड नहीं है फील्ड में. जब हम मेरे हिसाब से इसका इस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है, कभी कभी जैसे फील्ड है ना, डाउनलोड नहीं होगा. यहाँ पे स्क्रॉल बार बन जाए, अगर लंबा फील्ड आ जाए तो बन तो रही नहीं है. अब मैं क्या करूँ फिर, मैं क्या Scroll bar तो. नीचे बन जाती कीमत फील्ड के अंदर ही. हाँ. बताऊँ कैसे, जैसे तो उसने अगर true किया picture में यहाँ पे क्यों नहीं किया? नहीं किसी स्क्रॉल के लिए तो किया ना, हॉरिजॉन्टल के लिए स्क्रॉल किया हुआ है ना उसने. फील्ड के अंदर चलेंगे उसकी प्रॉपर्टी छोड़ो यार छोड़ो, इतनी सारी प्रॉपर्टीज को तुम डिस्कस करो. दिस इज ये ना तुम्हें मतलब मेरे, ठीक है, इट्स अ टेक्स्ट बॉक्स. ये इसकी गुई की प्रॉपर्टी है कि भी टेक्स्ट बॉक्स दिखाना है. क्या फर्क पड़ता है, तरह तरह के जो बॉक्सेस होंगे वो दिखाएंगे. डोंट वरी अबाउट एप्लेट दिस थिंग. टॉप 25 मुझे नहीं पता, देख लेंगे क्या होता है यार इसमें, क्या है अगर कभी टाइम लगता है तो. बट दिस इज हाउ यू ऑब्जर्व द प्रॉपर्टीज. सो नाउ यू नो द एप्लेट, यू नो द BC, and you know the control. You go to the control and now you also know the field name. This is the most important thing, right? It is LAST space NAME. So you go to the BC, look for the content BC, it is already there. You highlight the field. Now you can see all the fields. Click on L to get to all the last name fields. Okay? नहीं मैं नहीं करता, दिख रहा ठीक ठाक. फॉर सम रीज़न पता नहीं फील्ड्स के लेवल पे नहीं करता. इसका रीज़न बताऊँ क्यों नहीं करता. मैं तो एक चीज़ दिखा देता हूँ. ठीक है, स्टेटस फील्ड है ना, नोट करो. एल पे क्लिक किया, कुछ नहीं दिखा. सीवल में क्वेरी रिफ्रेश नहीं होती. तो अब मैं ये भी करूँगा ना, सिर्फ स्टेटस दिखेगा. तो मुझे क्वेरी पहले रिफ्रेश करनी है, फिर जाके मुझे वो दिखने स्टार्ट होंगे सारे फील्ड्स. ये कई बार आपको इशू आता है. मेरे को ये भी एक बार आपको दिखाना ज़रूरी है. आप लोग कोई बड़ी प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे. मैं आपको बता रही हूँ, बड़ी प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे, आप छोटी प्रॉब्लम में फंसोगे. दिख नहीं रही प्रॉपर्टीज विंडो. प्रॉपर्टीज विंडो कहाँ चलेगी, ये बंद नहीं हो रही, ऐसी चीज़ में फंसोगे. ये बंद नहीं हो रहा, क्या करना है. जहाँ तक मेरा अपना सोचना, जिसका डेली काम है वो अलग चीज़ों में फंसेगा, आप इसमें फंसोगे. लेवल पे query आपको कॉलम ही नहीं दिखेगा, कॉलम रिफ्रेश नहीं हो रहे. क्वेरी ऐसे जस्ट बता रहा हूँ. ठीक है. सो लास्ट नेम, नाउ वी आर एट द लास्ट नेम फील्ड. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इफ वी हैव टू, if it is a calculated field, the value will be written here. If you notice, Atif, look at this. Last name plus comma first name. This field is a calculated field. It is made of two calculations, last name and first name. Let's say users want last name comma first name field in GUI. In GUI, it is a matter of 2 seconds now to just expose it in the applet and field, applet and control. This is the field available out of the box. Calculated field है, out of the box available है. Only applet has to have an additional field control called last name comma first name. Right? Very little change. Let's look at the column name of this last name again. Let's go back to that. The column name is last underscore name. All these are empty field. Link specification. देखेंगे नो कॉपी अलाउड. जब कॉपी होगा, अगर मान लो कॉपी अलाउ होती है BC लेवल पे, लेट से कॉपी होती है, मतलब पूरा रिकॉर्ड कॉपी होता है, तो ये फील्ड की कॉपी नहीं होगी. समझ रहे मैंने क्या बोला. मान लीजिए आप एक फैसिलिटी देते हैं
कि पीपल कैन कॉपी द कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड. तो यूजर टिपिकली कब करते हैं कॉपी? बहुत सारे लोग आते हैं लेट से, उन सबके पैरामीटर सेम है, वो स्टेटस भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, वो एक्टिव है, वो उनकी स्पेशलिटी फिजिशियन है, बहुत सारे हैं. इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू रिकॉर्ड्स एवरी टाइम एंड फिल ऑल द फील्ड्स, दे कैन सिंपली कॉपी. ठीक है ना? और लास्ट नेम फर्स्ट नेम अपने आप डालना चाहते हैं वो. Then in that case, last name and first name will not get copied, and other fields will get copied. That is the specification that you have given. He will simply manage it like this. He will say at the field level, he will say no copy. See, again, as I said, field is the most important thing. This is where all those important properties are written. Required भी आएगा कहीं पे. Remember this post default value and pre default value. For example, pre-default value is nothing now. That means when you click on new, last name will be blank. Remember that was of default. That was the meaning of default. That value is mentioned here. See, I tell you something. Now, the very good example of tools. Another good example of tools. It happened with me. I clicked on status. The default value was active. Perfect. All of a sudden I was doing something. I was playing in the GUI only, and I clicked on status, I clicked on new, and the status field value came out to be something else, open. And I was like, what is the rule behind the scenes? That whenever this thing is there, then click as open. Whenever this thing is there, create the default as active. Basically, some rule must have been there behind the scenes, right? One option is observe all the permutations and combinations. Second is go behind the scenes and check. Okay, now you might choose anything. There were 80 products. It takes time and go in the tools, that's easy. 80 products एक एक करके देखने पड़ने थे मुझे. ठीक है ना? एंड प्रोडक्ट की टाइप पे लगा हुआ था रूल. इफ प्रोडक्ट टाइप इज ए, देन शो status is equal to open. If product type is this, then show status is equal to this in the service request. But I don't know, it's not product type. I checked on product. There were 80 products. I created a service request for all products one by one, and then saw for which one. Then again I got the rule for these 40 products status is A, for these 40 products status is C. Still I got the wrong rule because the rule is on product type. You understood? Yeah. So looking at the tools was तसल्ली उसी को जैसे कहते हैं ना, तसल्ली खाना खा के होती है. जितने मर्जी सुनते रहो पकवान की बात, खाने की बात, तसल्ली नहीं होती. खाना खा के ही तसल्ली होती है. 100%. अच्छा अमन, तुझे मेरी प्री डिफॉल्ट, if it is a pick applet type thing, there is a pick applet attached to it, it will be mentioned in this pick list field. Required, is it a required field? देखो जाके, it must be a required. See, required field is checked. Text length, dtype underscore text, validation. Remember I told you about validations, like whether कुछ वैलिडेशन लगी होती है वो यहीं पे लगी होती है. रिक्वायर्ड फील्ड तो इजीली मतलब हो जाता है कन्फिगर. वैलिडेशन कोई और भी लग सकती है, लाइक लेट्स से इट शुड बी बिटवीन ए एंड बी. ऐसे कोई भी वैलिडेशन लगेगी तो यहाँ लगेगी. कमेंट के अंदर लिखा रहेगा कि ये क्या चीज़ है. इसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हैं. विद इन दिस फील्ड देयर आर मैनी प्रॉपर्टीज विच आर ऑफ इमेंस यूज टू यू. Remember in applet and control I said don't worry about the properties. I would say you should know these properties a little bit. See, calculated, whether it is a calculated or not. This field is very simple. Whether this field is a result of a join with another table or it is directly coming from the base. Join will specify this. Okay. Currency code field, I don't know how it is used. Destination field, I know. Whenever there is, I don't know, बाद में करते हैं, मुझे नहीं पता कैसे होता है. Gaurav, हाँ, can you tell the currency code field? and क्या फर्क पड़ता है मुझे नहीं पता. वो मेरा टिकट है ना, वो करेंसी के बारे में है तो. हाँ, लेकिन वो करेंसी कोड से नहीं, मतलब उसका जरूरी नहीं लेना देना. लेट्स टॉक अबाउट द टिकट फर्स्ट, बिकॉज वो गुई पे ही हो जाएगी काफ़ी कुछ एनालिसिस. अगर कुछ जरूरत पड़ेगी यहाँ पे आके देखना ना, फिर उसके लिए थोड़ा डिग करना पड़ेगा. नाउ दिस फील्ड इज मैप्ड टू अ कॉलम last underscore name, and this contact table is mapped to a table called s underscore contact. Column properties are extremely unimportant. This is Sibyl's main funda.
एंड टेबल प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो एक्सट्रीमली अनइम्पॉर्टेंट. इसका रीजन है सीबल Oracle ना अपनी तरफ से काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज डालने का रिक्वायर्ड फील्ड जैसे उस पर भी सेटअप कर सकते हैं टेबल लेवल पे भी, पर सीबल के अंदर डेवलपर्स ना कभी भी टेबल लेवल पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे. रिमेंबर वी वांट ऑल द लॉजिक इन द बिजनेस लॉजिक लेयर. रिमेंबर तो इसलिए एक बेस्ट प्रैक्टिस है. सीबल बनी बनाई भी ऐसे आती है कि ऑल द प्रॉपर्टीज ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स आर सेट अप इन बिजनेस लॉजिक लेयर. रिमेंबर रिक्वायर्ड चेक मार्क वाज प्रोवाइडेड. This required field can be set up at Oracle level also, in table and column also. This column is a required column, but this particular property is never used, should never be used also. It will ruin the purpose of Siebel. Business logic layer is where all these properties need to be set up. Okay, for example, length of the field should be, let's say, 50. Remember, in the business component field there was a value called as, for example, last name. It is 50. Only fields. It is text length is 50, right? 50 is written now. This particular thing should be used in Siebel world. Oracle की table level पे भी, table are created in Oracle, right? Table and column level पे भी column की length will be specified. But Siebel मतलब वो उसको मतलब नहीं use करना to restrict the people. समझ रहे मैंने क्या बोला? बिजनेस लॉजिक लेयर. बिजनेस लॉजिक का फंड है कि all the business rated all the मतलब all the properties should be managed outside of tables and columns. So I can show you quickly table and column, but I will also tell you nothing is used there. This is the column table and these are the columns, and the name of the column was last name, last underscore name. Here this is the name. एंड टेबल की कॉलम प्रॉपर्टीज देख लें, बड़ी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम नोट करो, इनएक्टिव फॉल्स, ये एक्टिव कॉलम है, एक्टिव टेबल है, ज़्यादा प्रॉपर्टीज है ही नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हैं. या ये प्रॉपर्टीज डू नॉट वरी अबाउट दीज प्रॉपर्टीज एट ऑल. Even developers don't care. I tell you something what they do. Let's say they have to create another column called as middle name. They will copy last name from here. Making sense? They will not create any column from scratch. They will copy last name, just change the name to this thing. Then they know that all the important properties are copied properly. That's how they do. Okay? So now you know how to traverse this simple drawing. Only thing important is fields. There's no problem. Most important thing for you.